Hello children, welcome to our English grammar class for 7th standard. In my previous videos, I taught you about sentences and its kinds, differences between sentences, phrases and clauses. We also learnt about kinds of phrase and kinds of clause and noun and its kinds. In our today's video, we will learn about pronoun and its kinds. So let's get started children. What is a pronoun? A pronoun can replace a noun or another pronoun. We use pronouns like he, which, none, and you to make our sentences less awkward and less repetitive. This tells us about the purpose of using pronouns. Why do we use pronouns, children? We use pronouns to avoid the repetition of nouns in our sentences. हम प्रोनाउंस सेंटेंसेस में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें बार बार नाउन वर्ड को रिपीट ना करना पड़े. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन. सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउन आर ही, शी, इट and they. Now children, let us understand the use of pronouns with some examples. Here you can see the example. Marge went for a walk. In the second sentence, she went for a walk. So in the second sentence, she is a pronoun that takes the place of the noun Marge. तो बार बार हम मार्च नेम को रिपीट नहीं कर रहे हैं. हमने मार्च की जगह शी यूज़ कर लिया, जिससे हमारा सेंटेंस और अच्छा दिखने लगा. नाउ वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. What are the types of pronoun? How many types of pronouns we have? We have 11 kinds of pronouns. Pronouns are divided into 11 kinds, that is personal pronouns. Second is reflexive pronouns. Third is emphatic pronouns. Fourth is demonstrative pronoun. Fifth is indefinite pronoun. Sixth is interrogative pronouns. Seventh is distributive pronouns. Eighth, reciprocal pronoun. Ninth is relative pronoun. 10th is relative compound pronouns. 11th is possessive pronoun. We will learn about all these kinds one by one in detail. So let's learn about the first kind of pronoun, that is personal pronoun. What is a personal pronoun? Personal pronouns refer to specific persons or things. पर्सनल प्रोनाउन किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करते हैं. जैसे कैरन एट पिज़्ज़ा, शी वॉज हंग्री. द वर्ड शी इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन दैट रेफर्स टू कैरन. जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को रेफ़र करने के लिए कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. Now children, there are two kinds of personal pronouns, that is subjective pronouns and objective pronouns. अगर सेंटेंस में प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो हम उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे, और ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे. जैसे आई सब्जेक्ट है, अगर हम कहें आई लाइक टॉफ़ीज़ तो आई सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है तो आई हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन. इफ़ वी से टॉफ़ीज़ आर लाइक्ड बाय मी तो मी हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो हमारे पास कुछ सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, आई, यू, वी, ही, शी, इट और दे. और से अगर हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तो आई हो जाएगा मी, यू ही रहेगा, वी हो जाएगा अस, ही हो जाएगा हिम, शी हो जाएगा हर, इट ही रहेगा, दे का हो जाएगा देम. One more thing children, personal pronouns can be of three persons, that is first person, second person and third person. Now children, let me tell you what do we mean by the first person, second person and third person. Let me tell you, first person is the speaker in the sentence, second person is the listener in the sentence and the third person is the person being talked about in the sentence. जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हम बात कर रहे होते हैं सेंटेंस में तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन, और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो यू हो गया सेकंड पर्सन, और हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो ही, शी, इट हो जाएंगे थर्ड पर्सन, और इन्हीं के प्लूरल फॉर्म्स हैं वी, यू एंड दे. नाउ चिल्ड्रन, कम टू द सेकेंड काइंड ऑफ प्रोनाउन, दैट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. Reflexive pronouns are personal pronouns that have self
or selves added to the end. We can also tell that the reflexive pronouns are the pronouns which are used when the action done by the subject reflects back on the subject. जब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन से सब्जेक्ट खुद इन्फ्लुएंस होता है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे बॉब फिनिश द होमवर्क हिमसेल्फ, बॉब ने अपना होमवर्क खुद किया. तो यहाँ हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो इंडिकेट कर रहा है कि बॉब के द्वारा किया गया एक्शन उसी पे रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है. Now children, come to the third kind of pronoun, that is emphatic pronoun. Emphatic pronouns are a bit similar to reflexive pronoun, although there is a slight difference between them. What is the difference between them? Emphatic pronouns are merely used for the sake of emphasis. Emphatic pronouns बात पे जोर देने के लिए यूज़ होते हैं. जैसे एग्जाम्पल्स है आपके पास, आई माई सेल्फ शोड यू द वे, you yourself can explain it to me, we ourselves talk to PM. Now look at the first example children. If we say I showed you the way, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया, तो इसका मतलब भी वही है जो हम इस तरह से कहें कि I myself showed you the way, मैंने तुम्हें खुद रास्ता दिखाया. तो यहाँ myself वर्ड का यूज़ सिर्फ emphasize कर रहा है. Is it clear students? Now look at the fourth kind of pronoun, that is demonstrative pronoun. What are demonstrative pronouns? Demonstrative pronouns are the pronouns which are used to point out the person or thing we talk about. जब हम किसी person या thing की तरफ इशारा करने के लिए pronoun यूज़ करते हैं तो वो demonstrative pronoun होता है. For example, this is my book, these are teacher's book, this is that is my uncle, and those are my family members. Now children, let me tell you where do we use this, that, these and those. This is used for singular object situated close to us, and that is used for singular object situated far from us, and these is used for singular objects that are closer to us, and those are used for plural objects that are far from us. Is it clear children? Now come to the fifth kind of pronoun, that is indefinite pronoun. Now children, what are indefinite pronouns? Indefinite pronouns are used to talk about a person or thing indefinitely. जब हम सेंटेंस में क्लियर नहीं होते कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारा कुछ सर्टेन नहीं होता हम किस पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी से समवन नॉक्ड एट द डोर, किसने दरवाज़ा खटखटाया, तो वी डोंट नो कि हु नॉक्ड एट द डोर, दरवाजे को किसने नॉक किया है. वी सिंपली से समवन नॉक्ड एट द डोर. तो समवन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ indefinite pronoun. Here we have few more examples of indefinite pronouns like something, anybody, someone, none, somebody, everybody, anyone, nobody, everything, nothing, and everyone, etc. Is it clear children? Let's look at the sixth kind of pronoun, that is interrogative pronoun. What are interrogative pronouns? Interrogative pronouns are used to make a question such as who, whose, which, whom, what, and whom, etc. For example, look at the first example. Whom do you want to see? आप किसे मिलना चाहते हैं? तो the word whom is used to raise a question. So whom is an example of interrogative pronoun. Like which is the longest river in India? इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो which is used to raise a question. So which is an example of interrogative pronoun. Now children, it seems you clearly understood all the 6 kinds of pronoun. Moving on to the 7th kind of pronoun, we have 7th kind of pronoun as distributive pronoun. What are distributive pronouns? Distributive pronouns are used to talk about each and every person separately. जब किसी सेंटेंस में ढेर सारे लोग होते हैं और हम सभी के लिए वो बात अप्लाई करना चाहते हैं तो वी यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. फॉर एग्जांपल, ईच, आइदर, नन, बोथ, एवरीवन, एवरी, नाइदर, एनीवन, एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग. जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ईच ऑफ अस हैज़ अ बुक, हम में से हर एक के पास बुक है. तो यहाँ ईच टेल्स अस दैट, द यूजिंग द वर्ड ईच टेल्स दैट कि हम में से ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ द बुक.
Now children, moving on to the eighth kind of pronoun, we have eighth kind of pronoun as reciprocal pronoun. What are reciprocal pronouns? Reciprocal pronouns are used to talk about joint relationship, for example, each other and one another. Now children, where do we use these pronouns? Each other is used to talk about two people, and one another is used to talk when we are talking about more than two people or things. Moving on to the examples of reciprocal pronoun, we have one example as the two sisters loved each other. दोनों बहनें एक दूसरे को प्यार करती हैं. Now using the word each other indicates that the doer of the action is also the receiver of the action, and the receiver of the action is also the doer of the action. That is, दोनों बहनें एक दूसरे को प्यार करती हैं, यानी एक बहन दूसरी बहन को प्यार करती है और वो उससे प्यार पाती भी है. इसी तरह लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज़ दे चीटेड वन अनदर. उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया. तो हियर ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप चीटेड एवरी अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप. ग्रुप की हर एक मेंबर ने ग्रुप के दूसरे मेंबर्स को चीट किया. क्लियर स्टूडेंट? नाउ लुक एट द नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन, that is relative pronoun. Now what is a relative pronoun? Relative pronouns are used to combine or relate sentences or clauses together. Relative pronouns वो pronouns होते हैं जो दो sentences को या clauses को आपस में जोड़ते हैं. For example, who, which, as, whom, what, but, whose, that, etc. Look at the example sentence. The man who cheated you is my brother. So here who, the word who is a relative pronoun which is combining the two sentences as this man is my brother and this man cheated you. We combine the two sentences as the man who cheated you is my brother. Clear students? Look at one more example. The woman whom you met is my mother. The girl whose father died wanted to marry me, etc. Now moving on to the 10th kind of pronoun, we have 10th kind of pronoun as relative compound pronouns. And when the relative pronouns are compounded with the word ever, they become relative compound pronouns. जब हम relative pronouns के word में ever word add कर देते हैं तो वो बन जाते हैं relative compound pronouns like whoever, whenever, whichever, wherever, whatever, however, etc. Look at one example. I shall give you whichever you like. मैं तुम्हें जो तुम चाहो वो दे दूँगा. Now moving on to the next example, we have I don't want to hear whatever explanation you give me. मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता जो तुम मुझे बताओगे. Whenever I go to my hometown, I never forget to meet my friend. जब कभी भी मैं अपने होम टाउन जाता हूँ तो मैं अपने दोस्त से मिलना नहीं भूलता. Now children, moving on to the 11th kind of pronoun, we have the 11th kind of pronoun as possessive pronouns. As the name is clear, the possessive pronouns are used to express possessions or ownership. Possessive pronouns ownership को express करने के लिए use होते हैं. For example, mine, his, theirs, ours, yours, hers, its, etc. Like this book is mine, ये book मेरी है. This garden is ours, ये garden हमारा है. I hope children you clearly understood all the 11 kinds of pronoun. In our next video, we will learn about the adjectives. Thank you and bye bye.